Hello students, this video is for grade 2nd. So let us start. In this sheet, we are having 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects. The subjects are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject of the sheet, which is Maths. The question says match the following. Okay, the maths is based on tables. Okay, tables based है ये maths का question. क्या करना है? Match the following. You can see those in tables. Okay, randomly number pick किया है और आपको यहाँ पे आंसर देना है. Like 6 3s are 18. So you will match it with 18. 8 4s are 32. You will match with 32. 9 6 are 54. 6 8 are 48. 7 2s are 14. Understood? So what you will do is you will read the table and match the answers. Okay, table read करोगे और answers को match करेंगे. See the next question. Complete the table of 10. 10 की table complete करनी है and I hope you can do this. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100. Okay, in previous class we have studied table 2 to 5 and today we will read table from 6 to 10. Now, speak with me. 6 ones are 6. 6 twos are 12. 6 threes are 18. 6 fours are 24. 6 fives are 30. 6 sixes are 36. 6 sevens are 42. 6 eights are 48. 6 nines are 54. 6 tens are 60. 7 ones are 7. 7 twos are 14. 7 threes are 21. 7 fours are 28. 7 fives are 30. 7 sixes are 7 fives are 35. 7 sixes are 42. 7 sevens are 49. 7 eights are 56. 7 nines are 63. 7 tens are 70. 8 ones are 8. 8 twos are 60. 8 threes are 24. 8 fives are 8 fours are 32. 8 fives are 40. 8 sixes are 48. 8 sevens are
56. 8 8s are 64. 8 9s are 72. 8 10s are 80. 9 1s are 9. 9 2s are 18. 9 3s are 27. 9 4s are 36. 9 5s are 45. 9 6s are 54. 9 7s are 63. 9 8s are 72. 9 9s are 81. 9 10s are 90. So this was all about maths. What we have read table from 6 to 9. And 10 we have already done before. Now, see the next section of this sheet. Identify and write the type of gender used in the underlined noun. Okay, क्या करना है in this question? We have to identify the type of gender. Okay, we all know there are two types of gender, masculine and feminine. Okay, तो जिस अंडर नाउन को अंडरलाइन किया है उसका जेंडर आइडेंटिफाई करना है, वो मैस्कुलिन है मीन्स मेल है या फिर फेमिनिन है या फिर फीमेल है. अंडरस्टूड? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट दैट जेंडर. वी सॉ अ लॉयन इन द जू. हमने जू में एक लॉयन देखा, शेर देखा. तो क्या होता है लॉयन मतलब शेर. शेर क्या है? मैस्कुलिन. लॉयनस मतलब शेरनी which is feminine. So the lion is masculine. A-M-A-S-C-U-L-I-N-E. Masculine. Next, the king is so brave. राजा बहुत बहादुर है. King, king मतलब राजा. It is masculine. फेमिनिन क्या होगा? क्वीन मतलब रानी. सो किंग इज मस्कुलिन. M-A-S-C-U-L-I-N-E. masculine. Third is my brother is the best. मेरा भाई सबसे अच्छा है, बेस्ट. तो what is brother? Brother is also masculine. M-A-S-C-U-L-I-N-E. masculine. Okay, so on this basis what you will do is, first of all you will read the sentence, you will see the underlined noun. ओके, अंडरलाइन नाउन को आप देखेंगे, समझेंगे वो कौन सा जेंडर है, एंड देन ओनली यू विल राइट द टाइप. ओके, इफ द जेंडर इज मैस्कुलिन और फेमिनिन. नाउ सी द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस शीट. अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन. ओके, व्हाट यू विल वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, ब्लैंक्स फिलअप करना है. वी शुड ब्रश आवर टीथ डैश अ डे. एक दिन में कितनी बार टीथ ब्रश करना चाहिए? कितने बार ब्रश अप करना चाहिए? एटलीस्ट ट्वाइस. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. दो मतलब दिन में 2 बार. एक बार सुबह खाना खाने के सबसे पहले, ब्रेकफास्ट करने के पहले, और रात में खाना खाने के बाद, सोने जाने के पहले. ओके, सो वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. We should keep our nails trim or short. ओके, हमें अपने नेल्स छोटे या फिर ट्रिम्ड रखने चाहिए. We should bath at least once in a day. दिन में एक बार तो हमें कम से कम नहाना ही चाहिए.
We should bath at least once in a day. ONCE, once in a day. We should comb our hair at least once in a day. दिन में कम से कम एक बार तो हमें अपने हेयर्स को कॉम करना ही चाहिए. At least once in a day. Understood? So, in this way, what you will do is, you will write the perfect word which will be suitable in the blank. Blank में suitable होने वाले word को आप write करेंगे. So, this was all about today's sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.